So welcome to Vanik live classes. So students, practice makes the man perfect. आम यदि practice करिया questions तम questions easy हबो. तेणु आम यदि questions previous year देखिबा तले जो level question आछी से level question जदि police SI पे आम test करिबा बा try करिबा तो naturally our confidence will more. तेणु आजि today again some questions of previous year of similar type of questions of police SI we will discuss. Let us see how the questions are coming and how to solve these questions. Let us see. First question देखो, a man sells a pen at a profit of 20%. Had he bought it at 20% less and sold it for rupees 5 less, he would have gained 25%. So what is the cost price of the pen? Profit loss questions, and it is a very popular question. So profit loss केमते हम solve करिया easily. Let us see. तो प्रथम को जी man sells a pen at a profit of 20%. ताले हम यदि cost price 100 नबा, ताले that is selling price is 120. Let cost price equal to 100 part and selling price will be 120. So as per questions, had he bought it 20% less, यदि cost price 20% कमी दिया गला, ताले कितना आंसर होगा ताले 100 रु 20% कमी दियो, तो new cost price हला कितना that is 80 and sold it for rupees 5 less, आगो अपेक्षा 5 टंका कमी दिया गला, तो आगुर थिला 120 पार्ट, एसो पार्ट रची, तो आगो अपेक्षा जदि 5 टंका that is कमी दिया जाए, ताले there is a gain of 25%, ताले 25% जदि gain अछि, ताले selling price केते हिजबो, आनी थिबा cost price ऊपर 25% अधिका हबो. तो आमे जे आनी छे cost price 80 टंका रे, ताले 80 टंका रे 25% बढ़ाई देई परिबा, तो आंसर would be selling price केते हबो ताले 80 रो 25% 1/4 20 रुपीस बढ़ी जिवो, ता आंसर इज कमिंग 100. तो बिना कैलकुलेशन करि परिबा, तो 80 टंका रो 25% केते, तो 80 टंका 25% that is 1/4 is 20, तो 80 plus 20 that is 100. ताले आगुर बिक्री करथला 120 पार्ट, वर्तमान बिक्री करछि 100 पार्ट, ताले डिफरेंस ऑफ द प्रीवियस सेलिंग प्राइस एंड सेलिंग वर्तमान सेलिंग प्राइस रो डिफरेंस हला 20 पार्ट. तो 20 पार्ट रो वैल्यू हम देइ छि क्वेश्चन रे केते, that is 5 रुपीस लेस. तो आगो अपेक्षा पार्ट रे हमको 20 पार्ट रे बिक्री होछि, वर्तमान 20 पार्ट र वैल्यू 5 टंका, ताले व्हाट इज द प्रॉफिट, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेन, ताले 100 पार्ट पचरछि, ताले 100 पार्ट र वैल्यू केते, तो 20 रो 5 टाइम्स, तो 5 रो 5 टाइम्स, तो आंसर इज कमिंग 25. दैट्स व्हाई आंसर 25. तो हमें नॉर्मली करि परिबा विदाउट एनी कैलकुलेशन, एंड दिस इज पॉपुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस frequently coming in exam, any exam. That's why answer is coming 25. Very easily you can solve it. Next question देखिबा. Question number 2. So the bell of a clock rings twice when the minute hand crosses 12 and once when the minute hand crosses 3, 6 or 9. It is once. The bell of a clock rings twice. Dithra ring करूची जेतबेले minute hand crosses 12 and once when the minute hand crosses 3, एटा कमा दे परिबा 3, 6 or 9. So 3, 6, 9 cross कले तो one time ring होची, but after that is 12 crossing, so it is one time, 2 times rings होची. ताले question is how much time the bell ring in a day between 12:55 p.m. and 8:50 p.m. 12:55 रु 8:50. How much hour, ताले हम यदि ऑब्जर्व करिबा 1 hour रे केते that is ring, केते थरा ring होची 1 hour रे, तो 12 रे 2 times लिख दोची, 12 रे 2 times and 3 रे थरे, 6 रे थरे एवं 9 रे थरे, ताले 1 hour रे that is ring होची that is 5 times. यदि 1 hour ring होची 5 times, ताले हम यदि ऑब्जर्व करिया 12:55 रु 8:50 केते घंटा हला, ताले सेति इनटू 5 times कर देले सहज होई जिवो. ताले 12:55 रु 8:50 माइनस कर दियो 155, 1 2 3 4 5 6 7 8 hours. So from 12:55 ru 8:50 that is 8 hours. Kana 12:55 रे 12 कवर हबो, 1 आसले 12 कवर हबो and 8:50 रे 8:50 पर्यंत. ता माने 1 मु काउंट करछि 1
root 2, 2 root 3, 3 root 4, 4 root 5, 5 root 6, 6 root 7, and 7 root 8. Right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. How much hour it is coming? 1255, 155. 155 re, that is 5 times, right? So 155, 255, 355, 455, 555, 655, and 755. So 6 is 8 hours. That is 8 hours. So 5 times in 8. The answer will be 40 times. The option is, first option is A. So 1 hour question टी different अच्छी. तो 1 hour कितने थोड़ा रिंग होगी ना, that is 12 by 2 and 3, 6, 9 and 1, 1, 1. So that's it. 1 hour 5 times and complete 8 hours from 12:55 to 8:50. So answer above, that is 40 times they will ring together. Next question देखिबा, question number 3. Marks of 5 students are in the ratio 7:8:9:10:11. तो 5 students करो mark दिया है ratio, their average दिया है 90. तो how many times of students scored more than 75? Ratio दिया है तो तक average convert कर दवा. Average is given. Their average is 90. तो the average 90 अच्छी ताला आपको सब 90 रे convert कर average रे convert कर. जदि ratio हला 7:8:9:10:11 ताले तंकर average केता हबो? फर्स्ट देखो तंकर एवरेज केता हबो. तो 7 पार्ट, 8 पार्ट, 9 पार्ट, 10 पार्ट, 11 पार्ट रो एवरेज मिसै दियो. 8 7 15, 15 9 24, 24 10 34, 34 35 10 45. ताली हला 45 पार्ट. तो रेशियो हला 7:8:9:10:11 सम 45. तो व्हाट इज द एवरेज? बिकॉज़ एवरेज इज गिवन, एवरेज 90. तो 45 को 5 से डिवाइड कर देबी, तो दैट इज 5 एवरेज. तो एवरेज हला 9 पार्ट और 9 पार्ट वैल्यू दिए केते ना 90. तो सीधा हम 1 पार्ट वैल्यू पाई जिबा. तो 9 पार्ट वैल्यू जदी 90 ताले 1 पार्ट वैल्यू केते, दैट इज इक्वल टू 10. तो सम को हमें एवरेज रे कन्वर्ट कर दवा एंड एवरेज वैल्यू दिए 90. अदरवाइज ताकू मध्य हमें सम रे कन्वर्ट करि परिया. तो बेटर हबो जोडा क्वेश्चन दे इधर कन्वर्ट कर दियो. ताले 1 पार्ट जदी 10, तो क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स परसेंट लॉस डिफरेंस भाग दे परिबा. जदी 10% लॉस रे दैट इज 144 रुपीस सेल करूची, ताले 10% लॉस फ्रैक्शन वाला लिख परिबी. 10% लॉस फ्रैक्शन इज 9/10. 10% लॉस 9/10 is the selling price. रेशियो वाला सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस दैट इज इक्वल टू 9/10. 10 टंका जदी 10/100, 100 टंका जदी कॉस्ट प्राइस हुए ताले 10 टंका लॉस होला, ताले रेशियो वाला 90/100 and 9:10. सिमिलरली सेकंड नाम दरकार केते ना टू गेन 15%. 15% फ्रैक्शन कले 15/100 कटले 5 3000 5 20000. 20 टंका रे 3 टंका गेन अछि, ताले सेलिंग प्राइस हम 23/20. 23/20. सो दीटा फ्रैक्शन को बा दीटा परसेंटेज को गोटे प्रॉफिट लॉस दीटा को रेशियो कर देली. तो रेशियो करिवार कारण कोन? रेशियो कले दैट इज डिनोमिनेटर इज कॉस्ट प्राइस. 20 पार्ट एठी कॉस्ट प्राइस, एठी मध्ये 10 पार्ट कॉस्ट प्राइस. हम जानचे कॉस्ट प्राइस दीटा आर्टिकल रो समान हवा दरकार बिकॉज़ दैट इज सेम आर्टिकल. तेणु जदि कॉस्ट प्राइस समान नहीं ताले समान कर दियो एलसीएम नहीं की. तो ये 20 पार्ट अछि एंड ये 10 पार्ट अछि. सो बतना को 20 कर दियो. तो 20 into 2 आते 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देबी, एते 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देबी. तब बतन ऑब्जर्व करो. फर्स्ट आर्टिकल रो कॉस्ट प्राइस थिला 20 पार्ट एंड बिक्री होतला 18 पार्ट बिकॉज़ लॉस इज देयर. बट नाउ सेम आर्टिकल जहार कॉस्ट प्राइस 20 टका थिला एंड बिक्री हबो 23 पार्ट. तो व्हाट इज द 23 पार्ट वैल्यू पचारि. तो 18 पार्ट वैल्यू इज गिवन 144 एंड व्हाट इज 23 पार्ट. देखो 18 पार्ट रो वैल्यू 144, 1 पार्ट रो वैल्यू 8 एंड 23 पार्ट रो वैल्यू 23 into 8 8 3 24 16 17 18 184. That's why second option is the answer. तो रेशियो करि परिबा. तो सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस. सो 23 पार्ट 20 पार्ट पचारिची एंड इनिशियल देतला 18 पार्ट इज टू 20 पार्ट. कॉस्ट प्राइस समान करिवो देन कॉरस्पॉन्डिंग सेलिंग प्राइस पाइब. तो अदरवाइज ट्रेडिशनल कांसेप्ट मध्ये करि परिबा. नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा क्वेश्चन नंबर 5.
आम क्वेश्चंस के इजीली सॉल्व करिया सेटा बुझिबा दरकार ट्रेडिशनल कांसेप्ट यूज करे बड़ बड़ नंबर आसीबो कैलकुलेशंस भूल भाल हबार चांस अछि त आम रेशियो मेथड यूज करिबा शॉर्ट ट्रिक्स जोटा सहज हबो दैट इज यूज करिबा तो नेक्स्ट नाउ क्वेश्चन नंबर 5 रेशियो प्रोपोर्शन क्वेश्चन अगेन तो क्वेश्चन को जी rupees 525 is divided between A, B and C that A gets double of that B gets and B gets double of C. So how much more does A get than C? Difference बदल जी and sum दिया जी 525 टंका is the sum. तो यदि 525 को divide करिबा among A, B, C तो find the ratio which can be distributed in the ratio among A, B, C. ताले A, B, C रा ratio कौन कहूची so that A gets double that of B. A B रा double पाइबो and B gets double of C. ताले B मते C रा double पाइबो ताले रेशियो कहि परिबी A is to B is to C that is equal to B depend करछि C ऊपर A depend करछि A ऊपर ताले C को जदि one part नै जिबी suppose C that is one part पाइबो ताले B पाइबो double of that C ताले B पाइबो तार दुई गुणा two part and A पाइबो double of that B ताले B जदि two part पाइबो ताले A पाइबो चारि part तो सीधा हम करि परिबा because A depend करछि B ऊपर and B depend करछि C ऊपर ताले what is the ratio among A is to B is to C ताले 4 is to 2 is to 1 बर्तमान डिस्ट्रीब्यूशन करिबा 525 among them पचारछि what is B gets how much does A get than C how much more A C ର difference A C ର difference 5 part 3 4 minus 1 3 part so 3 part ର value पचारछि ताले इक्वेट करते 1 part ର value केते 4 2 6 1 7 7 part ର value हला 525 ताले 1 part ର value 7 7 49 7 5 35 तो 1 part ର value हला 75 ताले A पाइबो C टारु केते अधिका 4 part minus 1 part that is 3 part तो A minus C पचारछि that answer is coming 3 into 75 तो आंसर अब 3 5 15 3 21 1 22 so 225 टंका is the answer that's why option 4 is the answer option D so ratio proportion questions जहां पर क्वेश्चन दिया हिची ताको हम रेशियो कर दे परिबा अदरवाइज A by B करि परिबा ठी इंडिविजुअल करि परिबा A by B मध्य करि परिबा and B by C मध्य करि परिबा ताले H to B to C मध्य करि परिबा बट सिंगल लाइन सॉल्यूशन मध्य आंसर भाग कर दे परिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बा क्वेश्चन नंबर 6 टाइम स्पीड डिस्टेंस क्वेश्चंस क्वेश्चन पढ़ो फर्स्ट X runs one whole 1 by 2 times as fast as Y in a race if X gives a lead of 50 meter to Y find the distance from starting point at which both of them will meet so there is a race अछि suppose hela distance of the race from first to last starting point to finishing point but X runs one whole 1 by times as fast as Y ता माने स्पीड रेशियो देछि X and Y रो ताले X by Y रो रेशियो ऑफ स्पीड 2 whole 2 1 जा 2 plus 1 कर दियो 3 by 2 रेशियो वाला स्पीड दिस इज स्पीड रेशियो नेक्स्ट कोन दिछि इफ X gives a lead of 50 meter to Y ताले सेही रेस रे Y को 50 मीटर आगे ठिया कराइछि ताले X जदी स्टार्टिंग पॉइंट रे ठिया आइछि ए जगह X ठिया आइछि ताले Y ए जगह ठिया आइछि एंड ताकू 50 मीटर स्टार्ट दोस ता माने Y from this point to this point travel करिवो and X from this point to this point travel करिवो so find the distance from the starting point at which both of them will meet and this is the important line again meet both will meet माने जे टाइम कांस्टेंट हबो जदी meet हला माने टाइम कांस्टेंट time to meet so meet indicates time is constant तामे टाइम स्पीड डिस्टेंस रा कांसेप्ट जदी हम देखिबा प्रोपोर्शनलिटी ताले टाइम जदी कांस्टेंट हुए ताले स्पीड एंड डिस्टेंस आर डायरेक्ट वेरिएशन इफ टाइम इज कांस्टेंट तो स्पीड इज डायरेक्टली वेरीज टू डिस्टेंस तो स्पीड रेशियो जहां डिस्टेंस रेशियो मत से तो एटा ऑब्जर्व करो तो स्पीड रेशियो दिया हिची 3/2 ताले डिस्टेंस रेशियो करिवे X by Y also 3/2
The speed ratio 3/2 तारे distance ratio also 3/2. That means x जदि 3 part distance cover करिवो से टाइम रे टाइम being constant y करिवो 2 part. देखो एठु 2 part एठु अपन कवर करछि x 3 part ताले this distance हला केते ना 1 part. ताले x कवर करछि 1 part more distance than y but 1 part वैल्यू दिया छि 50. ताले को 1 part र वैल्यू जदि 50 दिया छि ताले total distance पचारछि. So 3 part is the total distance. That's the answer of 150 meter. That's why option is second option B. तेणु आम रेशियो यूटिलाइज करिबा जदि आम टाइम शिफ्ट डिस्टेंस कांसेप्ट जणा अछि बट ता पे का रेशियो अगेन यूटिलाइजेशन हबो तो हम क्वेश्चंस केमति इजीली सॉल्व करिबा दुटा मेथड वन इज रेशियो शॉर्ट ट्रिक्स अनदर इज फॉर्मूला नॉट रिक्वायर्ड तो बाय यूजिंग शॉर्ट ट्रिक्स रेशियो कांसेप्ट विदाउट एनी कैलकुलेशंस proportionality पकई परिबा टाइम टू मीट माने स्पीड एंड डिस्टेंस डायरेक्ट वेरिएशन सो स्पीड देछि माने दैट इज द डिस्टेंस देन फाइंड वन पार्ट देन फाइंड द टोटल डिस्टेंस. तो नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन पढ़ो फास्ट कौन लिखा है देयर आर 4 डिफरेंट रूट्स कनेक्टिंग टू डिफरेंट प्लेसेस डबलिंग है गोटे काटी दे. There are 4 different routes connecting two different places A and B in a city. The number of ways in which a round trip A to B can be made so that the route from B to A is different from the route from A to B. So question goes there is a distance from A to B. This is a route from A to B. And the number of ways in which round trip A to B and B to A. So A to B asibo and also B to A asibo, but different route A to B can be made so that route from B to A is different from A to B. Dita ka route alga alga asibo and 4 different routes दिया है. A to B को पहुंचा पे 4टा different route अछि. ताले जदि A to B 4 प्रकार वेज रे जाई परिबा ताले B to A जो रूट रे जीवो फ्रॉम A to B सेम रूट रे B to A रिटर्न करिवने ता माने गोटे वे कमी जीवो ताले जदि जाईची 4 वेज ताले रिटर्न करिवो 3 वेज ताले टोटल वेज कॉम्बिनेशन कोन हबो ना A to B and B to A ए थिले आमे एंड थिले मल्टीप्लिकेशन वे ताले A to B 4 प्रकार वेज and B to A 3 प्रकार वेज सो टोटल कॉम्बिनेशन हबो दैट इज टोटल 12 वेज राइट दैट्स ऑप्शन इज फर्स्ट ऑप्शन है. तो जो रूट रे जीवो एंड अदर रूट रे फेरिबो बट सेम रूट रिपीट हबने तो रिपीट ही थांदा किछि ए लाइन कहि न थांदा हाउ मेनी वेज ही कैन मेक ए राउंड ट्रिप द आंसर इज 4 into 4 दैट इज 16 बट क्वेश्चन इज जो रूट रे जीवो अदर रूट ऑफ रिटर्न रूट ता डिफरेंट हबो तो डिफरेंट मींस से रूट रे फेरिबने दैट्स आंसर हबो 1 कमी जीवो तो 4 वेज into 3 वेज दैट आंसर इज कमिंग 12 वेज. अदरवाइज हम कॉम्बिनेशन पकई बरिया एटी केमते यूज होछ एटा कॉम्बिनेशन 4C1 माने चारटा रूट अछि हमें नबा 4C1 सिलेक्शन करबा वन रूट रिटर्न करिया को 3C1 सेम आंसर दैट इज इक्वल टू 12. सो दिस इज ए क्वेश्चन फ्रॉम कॉम्बिनेशन तो 4C1 इज 4 3C1 इज 3 मल्टीप्लिकेशन इज 12. सो लेट अस सी अदर क्वेश्चंस नेक्स्ट क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 8 again race. In a 500 meter race, the ratio of speeds of two runners P and Q is 4:5. Again, दीजिए ratio दीजिए 4:5. Speed ratio वाला race दीजिए 500 meter. Speed ratio 4:5. If P has a start of 100 meter, P आगे ठिया है, एठी ठिया है Q, P ठिया है एठी. तो डिफरेंस आला 100 मीटर. तो क्वेश्चन इज व्हेन P has a start of 100 meter then what is the distance between P and Q at the finish of the race. जेतेबेले रेस कंप्लीट हबो से टाइम भितरे टाइम इट कांस्टेंट अछि P has a start of 100 meter then what is the distance between P and Q at the finish of the race right. तो रेस सरला बेल को what is the distance between them P and Q तला हम एटी ऑब्जर्व करिबा एटी ता मीनिंग ए भी क्वेश्चन से मीनिंग को होजी टाइम कांस्टेंट
एटी मध्यम क्वेश्चन इज जो टाइम रे दैट इज मीट करिवे एट द टाइम ऑफ मीट दैट इज द क्वेश्चन सेम टाइम टू मीट तो मीट हैला माने प्रीवियस क्वेश्चन भलिया हम यूज करि परिबा टाइम यदि कांस्टेंट हबो ताले स्पीड इज डायरेक्टली वेरीज टू डिस्टेंस हबो ताले स्पीड रेशियो अछि 4:5 ताले डिस्टेंस रेशियो कहि परिबा दैट इज आल्सो 4:5 तो टाइम टू मीट अच्छी माने स्पीड रेशियो इज सेम एज डिस्टेंस रेशियो ताले जदी स्पीड हला 4:5 ताले डिस्टेंस रेशियो आल्सो 4:5 तामे एटा पी रे अछि पी जदी 4 पार्ट डिस्टेंस कवर करिवो से टाइम भितरे एंड क्यू कवर करिवो 5 पार्ट ताले अगेन दिस डिस्टेंस जो स्टार्टिंग डिस्टेंस दियाइछि दैट इज द वन पार्ट तो वन पार्ट र वैल्यू 100 दियाइछि यदि वन पार्ट र वैल्यू 100 दियाइछि ताले 4 पार्ट पी कवर करिवो 400 मीटर से टाइम रे एंड क्यू कवर करिवो 500 मीटर तो रेस ताले एट पहुंची दिटा 100 मीटर आगे ठिया आइछि ताले पी 400 मीटर क्रॉस करी फिनिशिंग पॉइंट रे पहुंचीबो एंड क्यू मध्य फ्रॉम बिगिनिंग स्टार्टिंग पॉइंट रू मध्य भारी 500 मीटर कवर कर परिबो ता माने क्वेश्चन कहूची एट द टाइम ऑफ द फिनिश ऑफ रेस सल्ला को व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम तो डिस्टेंस की आसु नहीं बट बोथ आर रीचिंग एट द फिनिशिंग पॉइंट the answer is coming 0 both finish the race at the same time that's why option is B is the answer saman time रे race ro end point रे पहुंचबे and no difference will be there because same time रे B cover करिवो P cover करिवो 400 मीटर and Q cover करिवो 500 मीटर so next question जिबा question number 9 again combination question पढ़ो fast all लिखाई everybody in a room shakes hands with everybody else समस्ते संगे हैंडशेक कले the total number of handshakes is 66 the number of total handshake दियाला 66 then what the total number of persons in the room तो समस्ते हैंडशेक करछन हैंडशेक रो प्रिंसिपल हम जानछे कॉम्बिनेशन हैंडशेक रहला NC2 लगा हैंडशेक रो कॉम्बिनेशन फार्मूला हला NC2 हैंडशेक NC2 सिलेक्शन करबा एनी टू पर्सन्स रे गोटा हैंडशेक हबो तेनो नंबर ऑफ हैंडशेक्स अमंग n पर्सन्स आंसर will be NC2 तो as per this question टोटल नंबर हैंडशेक दियाइछि एंड n पचारछि नंबर ऑफ पर्सन्स प्रेजेंट माने n पचारछि ताला हम कहि परिबा NC2 रो वैल्यू दैट इज गिवन 66 एंड NC2 को कॉम्बिनेशन रे हम फैक्टराइज करि परिबा तो फैक्टराइज कले केता आछि NC2 हला n फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इनटू n minus 2 फैक्टोरियल that is equal to 66 and n factorial को expansion कले केता आछि that is n into n minus 1 into n minus 2 factorial and ऊपर n minus 2 factorial तले अछि n minus 2 factorial cancel हे जिवो तला हम लास्ट टू कोन पाइले ना n into n minus 1 that is equal to 2 रा सेपरे मल्टीप्लाई कर दियो 132 तो लास्ट कॉम्बिनेशन हम पाइले n into n minus 1 that is equal to 132 तले आको जे ओपन अप करिया ब्रैकेट तले गोटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आसीबो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अवॉइड करि परिबा तले हम कोन करि परिबा ना n into n minus 1 जदी 132 को दीटा टर्म रो कंजुगेटिव फैक्टराइज तले हम जानले दैट इज को लिख परिबी 12 into 11 132 इक्वल टू 12 into 11 तले n जदी हबो 12 n जदी 12 तले n minus 1 is 11 that's answer is coming 12 persons present n पचारिछ what is the value of n तो हम जदी n बार करिबा that is the number of persons present in the room and n is coming 12 that's the option is coming B तो 12 जन प्रेजेंट थिले in that room तो combination formula for handshake that is NC2 is given find the value of n next question jiba question number 10 again combination question permutation question habo question पड़ा फास्ट
Find the sum of all 4-digit numbers that can be formed using 0, 1, 2 and 3 with no digit being repeated in any numbers. Sum पचारिଛି. Find the sum. तो digit चार्टा अछि 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. And 4-digit number formation हबो 1, 2, 3, 4. No repetition कहिछि without repetition. But number of sum पचारिछि. हम पजानी how many numbers are formed. तो number of sum. ताले हम एमि भाग करि परिबा 1000 place ର sum plus 100 place ର sum plus 10 place ର sum plus unit place ର sum. So that is your answer. So total numbers ର sum तो 1000 place रे कोन कोन digit आसी परिबो. तेरा हम ऑब्जर्व करि परिबा 1000 place रे कोन कोन digit आसीबो समस्त place value 1000 तो digit रो sum करिकि 1000 रे मल्टीप्लाई करि परिबा. Similarly 100 place रे कोन कोन आसी परिबो सेमान को सम करिकि ताको हमें दैट इज 100 रे प्लेस वैल्यू रे मल्टीप्लाई करि परिबा एंड 10 प्लेस रे कोन आसीबो सिमिलरली जो डिजिट आसीबो तार सम करिकि दैट इज 10 प्लेस रे तार प्लेस वैल्यू रे मल्टीप्लाई करिबा सिमिलर आल्सो फॉर यूनिट. सो चारटा जाकर प्लेस वैल्यू संगे रे मल्टीप्लाई करिबा केते थरा आसीबो को डिजिट आसीबो. तो फर्स्ट ऑब्जर्व करो दैट इज 1000 प्लेस रे के आछंती. तो सब 0 तो आसीबोनी 1000 प्लेस रे केबे तो 1000 प्लेस ता 3 वेज रे सब पुट हे परिबो 3 वेज 1 आसी पारे 2 आसी पारे 3 आसी पारे. ताले जदि 1 आसुछ ताले 1 केथर आसीबो 2 केथर आसीबो 3 केथर आसीबो को ऑब्जर्व करबार अछि. 1000 प्लेस रे 1 केथर आसीबो 2 केथर आसीबो 3 केथर आसीबो. तो हम जदि देखिबा दैट इज सपोज 1 आसिला 1000 प्लेस रे 1000 प्लेस रे 1 आसिला तो एठी जहा भी आसु 0 2 3 परिबो 0 3 2 परिबो 1 रे कोइ परिबे पुन से 1 रे एडा 2 कर देबी 0 3 परिबो एंड एडा 2 रहिला त एडा 3 0 करि परिबो. अगेन जदि एडा 3 कर देबी 0 2 ही परिबो एंड 1 3 2 0 ही परिबो. तो 0 को कांस्टेंट करी 2 3 उल्टा करि परिबी 3 2 2 को कांस्टेंट करी 0 3 उल्टा उल्टा करि परिबी 3 0 एंड 3 को कांस्टेंट करी 0 2 एंड 2 0 तार माने हम कोन देखिले 1000 प्लेस रे 1 आसुची 6 थर 1000 प्लेस रे 1 आसुची 6 थर. सिमिलरली 2 आसीबो 6 थर एंड 3 आसीबो 6 थर. ता माने 1 2 3 जदि एटा 2 ने भी सिमिलरली 2 संगे 0 2 1 ही परिबो 0 1 2 ही परिबो जेन हम अरेंजमेंट कले सेमती 1000 प्लेस रे 2 मते 6 थर आसी परिबो 1000 प्लेस रे 3 मते 6 थर आसी परिबो. ताला हम एटी लिखि परिबी 1000 प्लेस रे each digit can come 6 times. के ना 1 आसीबो 2 आसीबो 3 आसीबो. तो 6 times that is 1 2 3 repeat for 1000 place. Then consider for 100 place. 100 place रे के थरा आसी परिबो लिखाइ जे देखो ऑब्जर्व करो जदि 1 टा को 1000 place करूजे ताले 2 आसी दी थरो. सिमिलर जदि 3 टा को 1000 place करबी ताले अगेन 2 आसीबो दी थरो. 1 को 1000 place करले 2 आसीबो दी थरो. 0 पे कंसीडर करेबनी बिकॉज़ 0 तो जेकोन्स प्लेस वैल्यू 0 आसीबो तो 0 पे हम कंसीडर करिया दरकार नै केवल कंसीडर करो 1 2 3 को प्लेस रे केतरा आछी. तो 1000 प्लेस रे 1 2 3 6 थरा आसीबे एंड 100 प्लेस रे 1 जदि 1000 प्लेस हला ताले 2 आसीबो दी थरो एंड जदि 3 जदि 1000 प्लेस रहइबो अनदर 2 टाइम्स आसीबो दैट इज 2. दैट्स व्हाई हम कहि परिबी 100 प्लेस रे 2 आसीबो 4 थरो. सिमिलरली जदि 2 आसीबो 4 थरो 3 मध्ये आसीबो 4 थरो जदि हम एटी 1 एंड 2 पकेइबा ताले 3 मध्ये 4 थरो. सिमिलरली 1 मध्ये आसीबो 4 थरो. ताले हम कहि परिबी 1000 प्लेस रे 100 प्लेस रे ताले 1 2 3 आसीबे 4 टाइम्स 1 2 3. नाउ कंसीडर फॉर 10 प्लेस एडाला 1000 प्लेस एडाला 100 प्लेस
एटा 10 प्लेस एटा यूनिट प्लेस सिमिलरली कंसीडर करो तो ये 10 प्लेस रे के केतरा अछि अब जो लिखा है देखो सब लिखा है हम यही डाटा रो सुविधा पाई जाई परिबा 10 प्लेस रे जदि 1000 प्लेस रे 1 आसला लाइक दिस त 10 प्लेस रे 2 मध्ये अगेन दिथर आछि 2 2 सिमिलर जो 3 नबा 1000 प्लेस रे अगेन 2 2 आसीबो दिथर ताले हम कहि परिबा 2 भी 4 थर आसीबो एंड 1 भी 4 थर आसीबो सिमिलरली एंड आल्सो 3 मध्ये 4 थर आसीबो ताले 10 प्लेस रे मध्ये दैट इज 4 टाइम्स 1 2 3 आसीबो नाउ कंसीडर फॉर यूनिट प्लेस सिमिलरली 2 मध्ये दिथर आछि 3 मध्ये दिथर आछि सिमिलरली 4 मध्ये 1 मध्ये दिथर आछि जदि हम 3 कर दबा त 2 कर दबा 1 मध्ये दिथर आछि 4 थर आसीबो ताले सब थर 4 थर आछि ताले एठी मध्ये 4 थर लेखा 4 टाइम्स 1 2 3 तो ये हला मेन कंसीडरेशन जदि हम नंबर पाई गेले के थर आसुची देन यू कैन फाइंड द सम लेट अस सी हाउ टू फाइंड द सम ताले हम जानले 1000 प्लेस रे 6 टाइम्स आसुची 1 2 3 and 100 place आउची 4 times 1 2 3 10 place रे 100 place that is 4 times आउची 1 2 3 10 place रे and also unit place रे 1 2 3 that is 4 times आछथि तले हम जे सम मार करिबा प्लेस वैल्यू रे मल्टीप्लाई करिबा विथ द डिजिट्स तले देखा आंसर केता आछी ओदा एटा लिखि दोची तले सम इक्वल टू जदि 1000 प्लेस रे 1 2 3 6 थरा आसिले ताले 6 into 1 plus 2 plus 3 into its place value 1000 एति आसीबो ताले 1000 प्लेस रो सम एटा आसीबो सम इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ 1 2 3 1 plus 2 plus 3 into 1000 times plus similarly 100 प्लेस रे 4 times of 1 plus 2 plus 3 into 100 times 100 place value plus 10 place रे 4 times of 1 plus 2 plus 3 into 10 place value and plus unit place again 4 times of 1 plus 2 plus 3 into place value is 1 तो ये हला sum of all the that is digits all the numbers formed by 0 1 2 3 of 4 digit numbers तो यदि sum करिबा केता आछी देखो so that is equal to ये 3 2 5 1 6 36 36 हजार प्लस ये 3 2 5 1 6 6 24 2400 प्लस ये 3 2 5 1 6 6 24 240 एंड प्लस 1 plus 2 plus 3 6 24 दैट इक्वल 24 तो एडिशन करके तो देखो 4 4 2 6 4 2 6 अगेन and that is 6 2 8 है और 30,664 राइट तो ऑप्शन फर्स्ट इज आंसर तो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो पुलिस एसआई भी एवडा क्वेश्चन आसी ची जदि एमते अप्रोच आसीबो बा क्वेश्चन आसीबो आल्सो यू कैन डू इट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लॉजिक नहीं परिबा तार फार्मूला उटा अछि n-1 फैक्टोरियल उटे फार्मूला अछि बट फार्मूला बे कांसेप्ट बुझो किए केथर आसुची देन यू कैन फाइंड जो जीरो थिबारु फार्मूला डायरेक्टली एप्लीकेशन होबनी and without using formula logic बुझिया हम दरकार तो 1000 प्लेस रे के केथर आछि 100 प्लेस रे के केथर आछि 10 प्लेस रे के केथर आछि एंड यूनिट प्लेस रे के केथर आछि तो सब जाक मिसै दला पारे प्लेस वैल्यू देन यू कैन फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 11 तो 11 को ची व्हाट प्रिंसिपल would yield a simple interest of rupees 25 invested at 5% for 3 months टाइम देची 3 months एठी तो हम फार्मूला पकई परिबा SI इक्वल टू PRT by 100 तो हम यदि फार्मूला न पकईबा रेशियो रे करि परिबा तो रेशियो इज इंपोर्टेंट ताले हाउ यू कैन पुट द रेशियो इन सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन देखो RT% कर दे परिबा आगो परसेंटेज को फ्रैक्शन कर दियो रेशियो कर दियो 5% सिंपल इंटरेस्ट रेशियो केम दी यूज देखो 5% है फ्रैक्शन 1/20 3 मंथ को ईयर कर दे परिबा 3/12 दैट इज कॉल्ड 1/4 तेणु 1/4 आम मैंने कौन बुझा पड़ी 20 जदि प्रिंसिपल हुए टंकाटे इंटरेस्ट वर्ष को
ताले वर्ष को जदी टंका इंटरेस्ट ताले 1/4 ईयर केते इंटरेस्ट हबो मल्टीप्लाई कर दबा इनटू 1/4 सो दैट इज इक्वल टू 1/80 लास्ट हम पाइले 80 जदी 80 टंका जदी प्रिंसिपल हुए ताले टंका डे हबो इंटरेस्ट ताले अमाउंट हबो 81 पार्ट ताले हम 1 पार्ट देछि इंटरेस्ट 25 टंका माने 1 पार्ट देछि तो 1 पार्ट जदी 25 ताले पचारछि कोन व्हाट इज द प्रिंसिपल पचारछि ताले 80 पार्ट पचारछि 80 * 25 25 अस्तन 200 तो आंसर इज कमिंग 2000 तो ऑप्शन सेकंड ऑप्शन आंसर तो फार्मूला न पकई मध्य करि परिबा फार्मूला पकई मध्य करि परिबा हम जानचे SI = PRT/100 तक मध्य पकई परिया बट अगेन रेशियो एप्लीकेशन ऑफ रेशियो इज इंपोर्टेंट कैलकुलेशन छोटा आसीबो एंड आंसर क्विक पाइबो नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा क्वेश्चन नंबर 12 right what is the arithmetic mean of the first n natural numbers arithmetic mean formula हम जानचे what is formula of arithmetic mean that is sum of numbers by number of numbers arithmetic mean formula one minute मजे मजे हैंग होछि प्रॉब्लम आछ हां हैंग हे गेला टी जल्दी आ हैंग हे गेला क्वेश्चन मार्क तालने किसी फंक्शन करनी
So let us see again. So question number 12, what is the arithmetic mean of first n natural numbers? So हम जानते हैं arithmetic mean formula, that is sum of numbers by number of numbers. Sum of numbers by number of numbers. So otherwise जदि series arithmetic progression अच्छी AP series रे अच्छी ताले हम करि परिया first term plus last term by 2. जदि AP series रे अच्छी ताले arithmetic mean, so that is equal to first term plus last term by 2. तो ये effectful होगा rather than this. तो हम बजारची what is arithmetic mean of first n natural numbers. तो प्रथम n natural numbers रो arithmetic sum बजारची ताले हम कोन करि परिबा sum भाग करि परिबा by number of n divide कर दे परिबा बट सीधा फॉर्मूला पकेबा, that is arithmetic progression series रो AP series रो, and AP series कहउची arithmetic mean of AP series first term plus last term by 2 ताले 1 plus 2 plus 3 plus up to n ये जदि नंबर हला ताले arithmetic mean of first term हला 1 last term अछि n ताले that is equal to 1 plus n by 2 is the answer. So option is n plus 1 by 2. Third option is the answer. First term पाई जिबा last term पाई जिबा मिसै दबा by 2 कर दबा बहुत shortcut हबो rather than the main formula sum of numbers by number of numbers. So let us see next question, question number 13. A vessel has 500 ml of pure milk. So from these vessels 50 ml of milk is removed and 50 ml of water is entered into the vessel. And if this operation is repeated 2 more times, ताम 3 थरे हला 2 more times थरे आगु रहिथिला, so n हला 3. What is the percentage of milk in the vessel at the end? तार हमें सीधा रेशियो पकई परिबा एठी देखो फॉर्मूला पकई परिबा बट मु कहली फॉर्मूला को अवॉइड करि परिबा देन दैट इज आंसर क्विक हबो. अगेन एप्लीकेशन ऑफ रेशियो इन दिस क्वेश्चंस कोन हबो प्रथम के थिला प्योर मिल्क थिला ताले फर्स्ट प्योर मिल्क पाई दिबा तो मिल्क लेफ्ट आंसर हबो मिल्क लेफ्ट. सो दैट इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम ऑफ मिल्क दैट इज इक्वल टू 500 इनटू यदि 50 ml विथड्रॉ होची ताले 50 ml टा 500 केते फ्रैक्शन डिवाइड कर दबा 50 by 500 दैट बिकम 1 by 10. तन 110 जदि विथड्रॉ करिबा ताले रहिबो 9/10 रिमाइंडर कांसेप्ट नै परिबा ताले 9/10 रो पावर 3 कर दबा because 3 time operated is. So this is the ratio of milk is to total. हम जोडी सीधा हेल्पफुल होबो without finding the actual volume ताले that is equal to 500 into 729 by 1000. जदि आकम पचारची then what is the percentage पचारची सीधा आदे 100 मल्टीप्लाई कर दियो. So this into 100. So that is your answer. तो डबल जीरो कटि गला और जीरो टी काट दे परिबा परसेंटेज पचारची सॉरी आगो वॉल्यूम भाग कर दोछ केतो होछ ताले वॉल्यूम ऑफ मिल्क केता बताले लेफ्ट रहिला. सो दैट इज इक्वल टू 500 into 729 by 1000. तो 5 रे काटिले 2 तो 2 रे काटिले सेम थाउ 729 by 2 जब 2 रे काटुची 36 दुने 72 एंड 2 8 1 9 36.45 liters. तारे क्वेश्चन बदरची 36.45 liters is what percentage of the total solution? What is the percentage of milk in the vessel in the that is entire process रे? ताले वॉल्यूम अछि 500 लीटर 500 लीटर रे जदी वॉल्यूम अछि ताले 500 लीटर रे 36.45 टा केते परसेंटेज दैट इज द क्वेश्चन आंसर बाग दियो. दैट्स व्हाई परसेंटेज ऑफ मिल्क दैट इज इक्वल टू 36.45 by 500 into 100. कटिला दिस इज वॉल्यूम 500 अछि. अगेन चेक ऑफ 50 इज फ्रैक्शनल दैट इज 1 by 10 राइट. तो 1 by 10 उड्रला रहला 9 by 10 एंड 9 by 10 रो क्यूब 500 into 9 729 by that is 1000 कैंसिल हो गला 500 into 2 that is 36.45 liters राइट.
तो क्वेश्चन को इफ दिस ऑपरेशन इज रिपीटेड 2 more times what is the percentage of milk in the vessel at the end, right? percentage of milk पचारची ताले मिल्क गला 36.45, vessel वॉल्यूम वाला 500, 36.45 कैलकुलेशन ठीक अछि। हां कैलकुलेशन भूल अछि। तो 37 to 9 को 2 रे डिवाइड करले केता आसीबो, दैट इज 36 दुने 72, 2 4 8 1 9 364.5। देन हमें सॉल्व इजीली सॉल्व करि परिबा। ताले 364.5 इज व्हाट परसेंट ऑफ 500, तो परसेंटेज ऑफ मिल्क इक्वल टू 364.5 बाय 500 into 100। खाली 5 रे डिवाइड कर दियो, 5 7 35 36 14 5 10 5 45 72.9%, that's why answer is coming C। तो फॉर्मूला लगे पारे एठी हम जानि छे a minus b by a to the power n, but without that formula तो रेशियो पकेबा तो मिल्क लेफ्ट दैट इज 500 into 9 by 10 to the power cube, बहुत इजी हबो। सो दिस इज द मिक्स्ड एलिगेशन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा क्वेश्चन नंबर 14। Find the square root of the short 7 plus root 48। तामन ताको a plus b रो होल स्क्वायर कन्वर्ट करिबा। Find the square root of 7 plus root 48 रो स्क्वायर रूट, so that is equal to एडा को 2ab रे कन्वर्ट करिबा ताले a plus b रो होल स्क्वायर कन्वर्ट हे परिबो। ताको हम कन्वर्ट करिबा जदि a plus b रो होल स्क्वायर रूट ओवर देन पचारची व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a plus b। ताले कन्वर्ट लिख परिबी 7 प्लस 2 टे बाहर को नै आसीबी ता माने 4 आसीबो एंड भीतर रहइबो रूट 12 द रूट ओवर, सो दैट इज इक्वल टू रूट 4 रो स्क्वायर प्लस रूट 3 रो स्क्वायर प्लस 2 into रूट 4 into रूट 3 तार रूट ओवर ता येला a plus b रो होल स्क्वायर दैट इज रूट 4 प्लस रूट 3 रो स्क्वायर रो रूट ओवर and answer is coming root 4 plus root 3, so that answer is coming 2 plus root 3, so that's why option is third option right answer। next question jiba, that is question number 15। from LCM question first पढ़ो कौन लिखा है। An army has got 378 swords and 675 spears which are kept in box such that there is equal number of weapons and each box, so it should be noticed that each box contains either swords or spears, so what is the least possible number of box the army requires? So least possible number of that is box केतना minimum box required, ताले जदि minimum box requirement हबो ताले maximum things should be in a box होगा दरकार। minimum box पाई कि हमर दरकार maximum things in a box so सेटा हम केमिन पाइबा maximum means greatest means HCF, तो first find what the HCF of these two numbers 378 and 675, so that is equal to HCF of 378 and 675, तो डिफरेंस भाग कर दियो दैट इज सेम आज HCF ऑफ डिफरेंस वाला 15 8 गले 7 एंड 6 रु 16 7 गले 9 5 3 गला 2 297 फैक्टराइज कर दियो 9 रे कटुची तो 9 into 18 9 3 27 33 हबो 3 into 11 तल देखो को फैक्टर काटुनी इनिशियल नंबर को से HCF ही परिबने, सो 9 हम देखिबा 7 3 10 8 18 7 5 12 6 18 9 कटि जाउची तो 9 दैट इज कॉमन आसीबो 11 8 3 11 11 फैक्टर हबनी बिकॉज़ 11 इज नॉट डिवाइडिंग 378, तो 11 दैट इज नॉट ए फैक्टर HCF ही परिबने। अगेन फर्दर 3 ही परिबो की आगो 9 रे काटचा में 9 3 27 9 4 36 9 3 18 42 आगो 9 रे काटुचे 9 7 63
and 50 45 75 and 42 again 3 काटुच that's why HCF will be 27 ताले हम जान ले that is 27 items can be put in one box ताले कितना box हे परिवो ताले first is how many swords box for sword तो box तब swords box will be number of box that is the 378 by 27 so 27 ones are 27 and that is 1084 so 14 boxes required for the swords similarly for spears box that is equal to total spears are 675 so 675 by 27 27 दुने 54 27 गला 3 and that is 135 तो 25 टा दरकार box ताले minimum box required for swords 14 and for spears that is 25 addition कर दियो total box equal to 5 4 9 2 1 3 39 box required तो option is second option B तो application of HCF not LCM the maximum things should be required in a box that is HCF then find that is number of box individual next question jiba question number 16 right question पढ़ो समझते लिखा है x plus 1 by x 3 what is the value of x fourth plus 1 by x fourth तो जदि x plus 1 by x 3 दिया है तो हमें that is power बढ़े बढ़े आंसर भाग कर दे परिबा सेति पे हम से टर्म मन थिबा दरकार सो अलजेब्रा रो जो ये टर्म अप टू x to the 6 plus 1 by x to the power 6 रो वैल्यू हम जान थिबा दरकार कौन से वैल्यू सब if x plus 1 by x equal to a plus 1 by 400 तो ये हला that is average speed that is called harmonic mean because distance equal अछि it is a square field is square field so that is equal to 100 कॉमन नेले ऊपर हे जो 400 400 by 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 4 how the addition kariba LCM of 12 OPRB 12 plus 6 plus 4 plus 3 12 ऊपर नहीं जाओ तो 400 into 12 by तले कितना चला 12 4 10 22 22 3 25 तो 25 काट ले 25 400 है तो 16 into 12 1272 मार के 12 7 19 192 किलोमीटर पर आवर दैट्स व्हाई राइट आंसर इज कमिंग सी तो एवरेज स्पीड मेन फार्मूला आप कहि परिबा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम बट बेटर हबो बाय हार्मोनिक मीन यूज करिबा दैट इज n by 1 by a plus 1 by b plus 1 by b plus 1 by c 1 by d तो नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा क्वेश्चन नंबर 18 question is from AP series if the 7th and the 13th term of an arithmetic progression is 34 64 then what is the 50th term of that series तो a भाग कर दियो d भाग कर दियो then find what is the 50th term तो as per this question 7th term दिया है 34 ताले a plus 6d दिया है 34 second 13th term दिया है 64 ताले a plus 12d दिया है 64 माइनस कर दियो व्हाट इज बड़ा सब ताले 6d इक्वल टू 64 minus 34 30 ताले d इक्वल टू 5 जो d हला 5 फर्स्ट फाइंड a जे कोन से गोटे इक्वेशन रे पुट करो देन गेट द a एटी पके दियो सो d जदी हला 5 एटा कते 30 ताले a वैल्यू हे जीवो 4 ताले a पाई गेले 4 d पाई गेले 5 देन फाइंड व्हाट इज द 50th टर्म तो t 50 पचरची that is a plus 49d and that is equal to 4 plus 49 into 5 so that answer is coming 4 plus 5 गुना 45 4 5 20 4 24 so 245 plus 4 answer la 249 that's the option is second option next question jiba question number 19 so number system question find the sum of numbers from 18 to 91 ताले consecutive numbers अछि 8 to 91 तो हमें मेन फार्मूला पकई परिबा n into n plus 1 by 2 बट सीधा फार्मूला पकई परिबा AP series हम जानते हैं SN in AP series
that is equal to n by 2 whole into first term plus last term. But n decide करियर अच्छी 18 रू 91 how many terms are there minus कर दियो 92 minus 18 12 8 गले 4 and 8 minus 1 अला that is 7 तो 74 terms are there तो sum would be 74 by 2 first term दिया है 18 last term दिया है 91 पूरे कर दियो 2 3 6 2 14 37 into 8 1 9 and 9 1 10 109 को 37 में मल्टीप्लाई कर ले लास्ट रिजल्ट्स कितने 963 3 आसी दैट्स ऑप्शन मस्ट बी ए 404403 is the answer. Otherwise n into n plus 1 by 2 formula पकई परिबा n into n plus 1 by 2 इरा दिथरा अप्लाई करे पड़िबो टाइम टेकिंग फैक्टर अगेन बट एपी सीरीज फॉर्मूला पकईले n by 2 whole into first term plus last term. Next question is about 20. Question says the difference of two numbers is 1365. On dividing the larger number by the smaller, we get 6 as quotient and 15 as the remainder. Suppose larger number is x. Difference of two numbers, larger number minus smaller number, it is given 1365. Second equation goes on dividing the larger number by smaller number. So quotient is 6, remainder 5. Quotient 6 and remainder 5. तार कोई परिबी dividend equal to divisor into quotient plus remainder. Concept use करी भाग करीबा. What is larger number? तो larger number equal to 6s plus 15. Remainder is 15. Right. ताले it is substitute कर दोगी. ताले 6s minus plus 15 minus s, so that is equal to 1365. Substitute this value of larger value. ताले 6s minus s अला 5s. तो 5s equal to 1365 minus 15, that is equal to 1350. ताले s equal to बस smaller number equal to 1350 by 5 5 10 35 5 35 270. हम 50 को number. So what is the smaller of the numbers? The smaller number is 270. Option is B. Larger number पचार थांदा, then obviously हमें add कर थांदे. ये equation पकी थांदे. Larger number equal to 270 into s. बात में सही दियो 270 plus 1365. Larger number भी 270 plus 1365. तो ये थांदा larger number. So right answer is coming 270. Option is B. So these are the questions of previous year's questions किछि थिला जोड़ा helpful होबो निश्चय to prepare for the exams. So thank you for all of you students.